देखने में तो इतना मोटा फिगर बनाया गया है, लेकिन देखिए होती इतनी पतली है। ये आपको पढ़ाने के लिए इसका सेंटर पार्ट जो है ये कोर है, और उसके ऊपर क्लैडिंग होता है, उसके ऊपर जो है ये बफिंग मटेरियल लगा होता है। आप कहेंगे क्लैडिंग क्या चीज है, व्हाट इज क्लैडिंग? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मटेरियल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर मटेरियल से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। ऑप्टिकल फाइबर में कुछ छोड़िए, आप लाइट के अंदर पढ़ा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब तक टू डिफरेंट मीडियम नहीं होंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है। तो टू डिफरेंट मीडियम बनाने की वजह से बीच में आपको क्लैडिंग डालनी पड़ेगी, जिससे लाइट बाहर न जा सके, कम बैक टू दी सेम मीडियम, जिस वजह से आपको क्लैडिंग लगानी पड़ेगी। अदरवाइज ऑप्टिकल फाइबर के अलावा जो दूसरी केबल थी उनमें ऐसा क्लैडिंग का मटेरियल नहीं था। तो जो पहले कम्युनिकेशन लिंक आपने पढ़ा हुआ है, कम्युनिकेशन में वही लिंक ये भी है। देखिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है इन, क्योंकि आपका योर इंफॉर्मेशन इज मोस्टली ऑन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, audio, video, data, whatever may be, that is in electrical form. But you have to convert into optical form. And converting into optical form, you need to send this information into optical fiber. I need the optical receiver also. Optical receiver means demodulator, जो आपको पढ़ाया जाएगा, ILD, then transmitter also, laser, and then end में you get the your original information. So that is the general basic optics block diagram. What is the main purpose? To convert the electrical signal into light signal. That is the purpose of transmitter. इसके लिए either use laser diode or light emitting diode, whatever may be, that is used in transmitter. Receiver side, either PIN diode or avalanche photodiodes. Both are diode, but construction is different. They are used for receiver side. And detector is PIN. That is APD means avalanche photodiode. So these are the detector used for the to convert back the original information. This is the detailed block diagram of the optical fiber communication. The same block diagram which was having only the source, medium and receiver destinations has become this much because of the very precision technology in the optical fiber communications. If you take the block diagram, same electrical source, and this is the transmitter portion, means you have to convert the electrical signal to optical signal. So drive circuit, if your information is too low, either audio or video or whatever may be, so you need the driver, because each transmitter needs minimum input level, then it will give the required output. यदि आप ऊँट को खाना नहीं देंगे तो ऊँट आपको जेब ऊपर छत बैठा लेगा भी नहीं, वो खाना खाएगा तभी तो ले जाएगा आपको। जब कोई आपका ट्रांसमिटर मीन्स पावर एम्पलीफायर है, उसको ड्राइव सिग्नल नहीं मिलेगा, वो फुल कैपेसिटी में आपको एम्पलीफिकेशन नहीं दे सकता है। सो यू नीड दी ड्राइवर। देन कम टू द लाइट सोर्स वेयर यू वांट टू मॉड्यूलेट इट। जो आपकी कैरियर थी एनालॉग एंड डिजिटल में, अब यहाँ लाइट सोर्स आ गया है, एंड देन पुट दैट लाइट इनटू ऑप्टिकल फाइबर। देखने को तो फिगर बड़ी इजी दिखाई दे रही है, लेकिन जब ये कनेक्टर देखेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कनेक्टर्स होते हैं ये। योर लाइट शुड नॉट लीक फ्रॉम द कनेक्टर। नाउ द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट and it is leaked, it means we are losing the information. So
very complicated precision make connectors are used. Then optical slices जोड़ेंगे उसको बीच में. Optical fiber है. Suppose you want to take out some material or put in between the material. ये नॉर्मल आप केबल नहीं है जो आप उठाया उसमें सोल्डर कर दिया ज्वाइन कर दिया. Proper optical coupler or beam splitter are used. स्प्लिटर आपने माइक्रोवेव में भी देखे होंगे, वेव गाइड में भी देखे होंगे. Similar type is this one here. And then this is the regenerator. What is regenerator? In the way, signal will be lost. There are hundreds of ways to attenuate your signal. And if you do not maintain the signal level, it is difficult to reach the destination. So regeneration means optical receiver, electronics and optical transmitter means very difficult to amplify the optical signal. So you have to again convert into analog, means electrical signal, and then convert to again the optical signal. So that is a complicated process. It's not like the ordinary audio video amplifier. In between you put whatever you like. Light amplification is not so easy job. To maintain that one, you have to again convert from optics to electrical, then electrical to optics, again to maintain that one. And then put the optical amplifiers. These optical amplifiers are not same as used in audio video amplifier in analog or digital form. Totally different amplifiers. Then again, that was the transmitter. Now this is the receiver. The reverse process to be followed. Photo detector means your information has been converted into light, means photo. So you need the photo detector, not the AM and FM detectors. Then if the signal level is low, you have to amplify it. If still signal has deficiencies, you may need the equalizer also. And then end signal is taken out. So this is the general block diagram of a optical fiber communication system. So either you convert from optical to electrical, or electrical to optics. These are the various links. So far you have studied the diagnosis, means the where to see the signal, oscilloscope or any of the display devices, and they are all in electrical forms. Because to see the light, you need some display unit. So again you have to convert the light into electrical and then see these various, because you cannot see the light frequencies by open eyes. So you have to convert into electrical form. So transmitter, receiver, and in between the cable. See, it is optical fiber communication. Three things are involved: transmitter, receivers, and the medium, that is the cable. So during the introduction part, we are giving you only the role, but the detailed part will be taken by various experts. This was not in the analog communication, in the optical, other than the optical communications. There were no such thing inside the coaxial cable because there are no lights, so there are no question of reflection of the light. Here the information has been converted into light, and the cable that is very thin. Even then, the width of the cable or diameter of the cable is much more higher compared to the wavelength of the light. So what will happen? The light has chances to be reflected back from the walls of optical fiber. And figure how the information propagates inside the optical fiber. See here, there are maybe different angles of this putting the light inside the fiber.
and different angles means different reflections. So light travels inside the optical fiber having different reflections. This is the symbol of the cable. This is the cable. One is core, another is the cladding. If you remember, the refractive index of the core is higher compared to the cladding. आपने पढ़ा भी होगा. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जब डेंसर मीडियम से लोअर मीडियम में जाते हैं तभी लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होती है. तो ऑटोमेटिकली you have to maintain the refractive index of the core higher compared to the cladding, and these are the N1 and N2 we have been defined it. And now see what is this is 62.5 micrometer. Imagine how thick is this cable. It is in micrometer, not even millimeter. In micrometer, very thin cable has been put inside this one, and cladding is around 125 micrometers. But this is not a perfect in all cables. It depends upon whether it is step index fiber or gradient index fiber or single mode fiber or multi mode fiber. So this cladding and core width will go on changing depending upon the type of the cable. So this is one information, however the optical fiber, different type lights and other things. So this is one, the first optical fiber which was generated having the 20 dB per kilometer losses, and that was the frequency used was 633 nanometer. Then the improved version came later on. It came to 5 dB per kilometer at 1330 nanometer. It means you are going on increasing the wavelength, losses are going on decreasing. Then the end at present 0.2 dB per kilometer at 1550 nanometers. यदि मैं और वेवलेंथ इसकी बढ़ा दें तो क्या होगा, क्या पॉसिबल है? जिसमें देख रहे हैं कि वेवलेंथ बढ़ती जा रही है तो लॉसेस कम होते जा रहे हैं, तो हम इसको 15 से 16, 17, 18 और कर देंगे. व्हाट मेक्स डिफरेंस? क्या पॉसिबल है? देखिए जरा आगे. ये देखिए एटेन्यूएशंस ऑफ सिलिकॉन फाइबर. जो मटेरियल यूज किया जाता है, सिलिकॉन मटेरियल यूज किया जाता है. जो फर्स्ट, दीज आर थ्री विंडोज of optical fiber communications. The first wattage around 800, and the second came in 800 nanometer. If you go micrometer, it will be 0.8 micrometer. So it was 800. Then came to the around 1300 nanometer. When the people started still going higher wavelength, then losses again increased here. See here, it is between the attenuations and the wavelength. यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअस लॉसेस कम हो रहे हैं. देखिए एकदम लॉसेस यहाँ फिर बढ़ गए. लोगों ने समझ में आ गया कि अब यहाँ से आगे काम पॉसिबल नहीं है. यदि हम वेवलेंथ बढ़ाते जा रहे हैं, नो डाउट लॉसेस कम होते जा रहे हैं. लेकिन व्हाट हैपेंड एट 1400 नैनोमीटर, अगेन लॉसेस इंक्रीज्ड. कुछ लोगों ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हिम्मत नहीं हारते हैं. कोई बात नहीं, और आगे बढ़ो, देखो और कहाँ मिलता है. देन दे फाउंड दैट द लोएस्ट दे फाउंड एट 1550 नैनोमीटर. एक उनको विंडो और मिल गई, दैट इज अराउंड 1550 नैनोमीटर, जिसमें आपको लॉसेस 0.2 dB पर किलोमीटर आए थे. इसके बाद बियॉन्ड और आगे यदि बढ़ाना शुरू किया तो लॉसेस बराबर बढ़ना शुरू हो गए. दे कुड नॉट फाइंड आउट द सॉल्यूशन. मींस इंक्रीजिंग द वेवलेंथ could not solve the problem.
Then other research is started. In optical fiber communication, what are the losses? They are not just resistance in the system, because optics do not have the resistance like the electrical resistance. The pulse width widens. It means your attenuation increasing. If anyhow you maintain the pulse width, it means you have amplified it. Then soliton came in picture so that you can maintain the pulse and can go beyond the 1550 nanometer. So this is the figure 1550 nanometer. That was the highest for the edge concern without using the solitons. The minimum losses, minimum attenuation in the optical fiber is at 1550 nanometer. So these are different types of the cables. See here, multi-mode step index. I will tell you what is difference between the step index and gradient index, multi-mode and single mode. So this is the one cable. Seeing the figure, you are seeing the light reflections, the internal light reflection. That is in case of the step index. But in case of the graded index, light is not reflected back in the linear matter. It is reflected back in the non-linear form. Means you cannot define that if you have sent the light, it will come immediately reflected back. In both the cases, the refractive index at the center is higher. But because of the different type of material and construction of the material, the graded index came in picture. If you see here this side, the flattening of the light is much more compared to the graded index. Means losses are more in step index compared to the graded index. Now this is the another single mode fiber which has the minimum width of the fiber. यदि लाइट के लिए कोर की विड्थ इतनी कम है, उसको प्ले करने का मौका नहीं होगा तो लॉसेस भी नहीं होंगे. जब आप भीड़ से निकलेंगे तो आपको हिंड्रेंस पैदा होगी. जब भीड़ ही नहीं है, एक सिंगल चैनल गए आप सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल जाएंगे तो लॉसेस भी कम होंगे. तो मिनिमम लॉसेस आर इन single mode fibers. Same thing. One side this is input pulse, this is output pulse. It depends upon the which type of fiber you have used. Well defined from the figure. This is for the step index, this is for graded, and this is for single mode. And you see the output. Highest output available in single mode, then higher is in graded mode, and then minimum available in the step mode fiber. What are the advantages of optical fiber? So far we have taken much time because of the optical fiber. What are the advantages? Very high information carrying capacity in gigahertz. You have been weeping for the megahertz, now it takes the gigahertz, the carrying capacity. And 3 lakhs voice channel can go from a pair of fiber. जहाँ हार्डली 20 आदमी एक पेयर में बात कर पाते थे, यहाँ 3-3, 4-4 लाख आदमी एक फाइबर में बात कर देंगे. सो इवन 2.5 गीगाहर्ट्ज तक की जो है कैपेसिटी की जो है ऑप्टिकल फाइबर तैयार हो चुकी है, जापानी ने तैयार किया हुआ उनको. लॉसेस आपने देख लिया 0.2 dB पर किलोमीटर. जहां रिपीटर माइक्रोवेव में जगह जगह लगाने पड़ते थे,
यहाँ रिपीटर लगाने के बहुत, क्योंकि लॉसेस कम हो गए हैं तो रिपीटर भी घट जाएंगे इसमें से। कोई जरूरी नहीं है कि 100 किलोमीटर वो है, डिपेंड अपॉन द लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर्स। मटेरियल की कोई देश में कमी नहीं है। सो दीज आर दी एडवांटेज ऑफ दी ऑप्टिकल फाइबर। सिक्योरिटी में यूज हो रहा है, जगह जगह इसके यूजेज हो रहे हैं। बिगेस्ट एडवांटेज है कि आप इसमें किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या किसी इफेक्ट यूज नहीं होता बाहर से, जो हमारे इलेक्ट्रिकल केबल में था। आप मैग्नेट लगा देंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे या डिस्टर्बेंस कर देंगे, स्पार्किंग कर देंगे, वो ऑप्टिकल फाइबर में नहीं होता है। फ्री फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। शोर मचाएं, कुछ भी करें, उसमें कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। आप टाइपिंग भी करते तो इंफॉर्मेशन छेद करके, यदि शरारत की होगी तो केबल से आप इंफॉर्मेशन निकाल भी लेते थे। ऑप्टिकल फाइबर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आप कनेक्टर नहीं जोड़ पाएंगे उसका। निकालने की कोशिश करेंगे तो उसका स्प्लिटर ही नहीं बना पाएंगे, वो निकलेगा नहीं। सो बैंक, डिफेंस, सभी जगह इसको यूज किया जा रहा है। सो स्मॉल साइज भी होता है, इजिली भी होता है, 100 ऑफ, बहुत सारी कैरिंग कैपेसिटी है। वेट भी ज्यादा नहीं, देखिए इसमें कोई वेट नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट होती है। तो दीज आर दी बहुत सारे एडवांटेज हैं इसके। लाइटिंग में नहीं होगी, टेम्परेचर का भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सबसे बड़ा इफेक्ट तो एनालॉग में आता है टेम्परेचर का, इसमें कोई टेम्परेचर का भी इफेक्ट नहीं आएगा। 25 साल तक लाइफ होती है। नॉर्मल केबल की लाइफ कितनी होती है? नॉर्मल केबल जो है 10-15 ईयर्स होती है। जिस समय स्टूडियो बनाया गया था, जो हमने इसमें केबल डाली थी, वो आजकल सब खराब होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि 20 साल पहले बनाया गया था स्टूडियो। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर की लाइफ फिर भी ज़्यादा होती है। हो सकता है ये स्टूडियो के अंदर जो केबल पड़ी हुई हैं, ये दोबारा बदलनी पड़ेंगी। एडवांटेज तो बहुत देख लिए, डिसएडवांटेज भी होंगे। देखिए डिसएडवांटेज क्या क्या है। ऑप्टिकल फाइबर्स आर एक्सपेंसिव, महंगी भी पड़ती है। मटेरियल उसका सस्ता है, लेकिन बनाना महंगा है। वो जो अभी हमने बात की थी, वो मटेरियल सस्ता है लेकिन बनाना महंगा है। प्रिसीजन की बहुत जरूरत पड़ती है इसमें। जो ऑप्टिकल फाइबर बनाएंगे बिल्कुल स्मूथ सिमिलर होना चाहिए। ऐसा कहीं नॉर्मल केबल में नहीं था कि ऐसे कोई प्रिसीजन है कि बिल्कुल सेम थिकनेस का पूरा केबल बना होगा, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। लेकिन यहाँ प्रिसीजन है। नहीं होगा तो क्या होगा? जो उसके अंदर रिफ्लेक्शन हो रहे हैं फाइबर के अंदर, वो सब चेंज हो जाएंगे। रिफ्लेक्शन चेंज हो जाएंगे तो आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। इसकी इंस्टॉलेशन भी इतनी ईजी नहीं है। केबल तो आपने जहां से पाया वहां से बिछा दिया, जोड़ दिया, वो कर दिया, इट्स डिफिकल्ट। द इंस्टॉलेशन इज नॉट सो ईजी फॉर द ऑप्टिकल फाइबर। ओनली स्पेशलाइज्ड पीपल एंड इक्विपमेंट्स आर यूज्ड टू इंस्टॉल द ऑप्टिकल फाइबर। ज्वाइंटिंग, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, जिसको स्लाइसिंग बोलते हैं, वेरी डिफिकल्ट पार्ट, ज्वाइंट। So careful handling is required for this installation of the optical fiber cable. We have used the 3 windows, mostly 30 nanometer wavelength पे यूज किया है. Low losses are only at 1550, so you can go up to 10 gigahertz. So these are the certain frequencies, and in each cases you have to convert optics to electrical to optics. These are the procedure used in optical fiber communication. So what are the optical system now? The amplifier is called the erbium doped fiber amplifier, which can directly amplify the light. The low loss window, that is available at 1550, and you can use the WDM and soliton pulses to make the pulses equal, because the flattening of the pulses is the attenuation. If you can maintain the pulse width
pulse height and width, then means attenuations are minimum. These are the various specifications of the any cable. Suppose you want to purchase the cable. If you go to the market, I want 10-meter cable, a fabric cable, usually what are the specifications? Which type of cable you need? First step is single mode, multi-mode, graded, or in depth. What type of cable you want? Then which dimensions? So written here, clad diameter, all parameters are written here. कोर के पैरामीटर क्या होंगे, कोटिंग के पैरामीटर, सब all parameters are written here. किस पर्पज के लिए, किस फ्रीक्वेंसी के लिए, किस टेम्परेचर के लिए ये पर्टिकुलर केबल यूजफुल है, कहाँ यूज, किस पर्पज के लिए चाहिए. देन यू हैव टू डिफाइन ऑल पैरामीटर्स as a part of specification of the optical fiber cable. So it is not so easy that just like in coaxial cable you go, I want to use for TV or I use for audio. You have to define the special parameters, for which purpose you want to use. So these are all part of the specification of the optical fiber cables. There was no such precision in installation and cabling the normal cables. This optical fiber cable run from one continent to another continent, thousands of kilometers. What is possible to put the coaxial cable thousands of kilometers? Very difficult. The regions where the weight, that was the biggest region. 1000 किलोमीटर, 2000, 10,000 किलोमीटर की कितनी वेट होगा केबल के अंदर. देन द कैपेसिटीज, द डाटा कैरिंग कैपेसिटी, another big things, and in between joints. And the biggest advantage is the electrical and water, no effect of electrical and water. There was no way to put the cable from one continent, from Europe to USA, through the water. Now it is going, because the microwave, after every 50 kilometer you need the repeater. पानी के अंदर repeater आप बना नहीं पाएंगे. If you go satellite, no doubt it covers the longer distance, but how much data it will take? Though we have used earlier, now the advanced form is the optical fiber, to go from one continent to another continent, having the minimum losses, 0.2 dB per kilometer. यदि कहीं खराबी हो जाएगी तो पानी के अंदर घुस करके आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं जा करके. तो यू हैव टू फाइंड आउट jointless long cable, and that is possible through the optical fiber. So see here, big roles they put. Precision, laboratories, where it is generated, where it is tested. So how the manufacturing is not so easy. Only optical fiber material is easy, but manufacturing is not so easy. How installed? Big team is installed. Installation purposes. We use the machineries, specialized people, equipment to install the cable. So this was about the introduction about the optical fiber communication. And thank you very much for listening us. Now question from the remote center. If anybody has any question about the introduction of the optical fiber communications, the detailed part will take in future, means after 2 o'clock. Any question from nodal center? You listen us. Remote centers, you are requested to please ask your question and have the clarification about the optical fiber communication, only the introductory part. The demonstration and hand-on practice part will be taken in the some other sessions.
Anybody has any question? If no questions, I close this session here and hope to meet you at 2 o'clock. And we have invited the expert from scientific laboratory to discuss about the optical fiber communication. And Dr. Umesh Tiwari from CSIU will interact with you. Till that, thank you. चलें खाना खाएं